असम के अभयापुरी में दिल को दहलाने वाली घटना हुई है। एक शख्स ने अपनी पत्नी और बेटी पर तेजाब से जानलेवा हमला किया और मौके से फरार हो गया। शख्स की पहचान जाहिदुल इस्लाम बताई गई है। बहरहाल एसिड हमले में बुरी तरह जख्मी मां और बेटी का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां दोनों जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। अभयापुरी के टापातारी की यह घटना है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी मची हुई है। हमार डुमुरिया गाँवर छोৱালী टापातारीत बिया दिছো। আজি নাৰী দিৱস গ'ল, তাৰে তাৰ নিজৰ হাজবেণ্ডে তাৰ নিজৰ ছোৱালীটোক আৰু সেই বোৱাৰীটোক ইচিটেৰে আক্ৰমণ কৰিলে। ইহঁতে বৰ্তমান মৰণৰ লগত যুঁজি আছে দিনাৰাম হস্পিটেলত। এইটো আমাৰ উচিত তদন্ত কৰিব লাগে, প্ৰশাসনৰ ওচৰত এইটো আমাৰ দাবী। যিজনে এসিড ঢালিছে তেওঁৰ নাম কি? যিজনে এচিড ঢালিছে তাৰ নাম আছিলে জাহিদুল ইছলাম। ঘটনাটো হৈছে তাৰ নিজ ঘৰতে টাপাতাৰীত। কি কাৰণত জানে নেকি? কি কাৰণত আমি সঠিকতো নাজানো, কিন্তু পাৰিবাৰিক কাজিয়াৰ কাৰণে হ'ব, মানে ৰাইজৰ ওচৰত শুনা পালো।